बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछे जाते हैं, जिनको याद करना ज़रूरी है। बार बार पेपर्स के अंदर रिपीट किए गए हैं। पीपीएससी का पेपर हो, एफपीएससी का पेपर हो, सीएसएस का पेपर हो, अब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो जॉब से रिलेटेड है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बार बार पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो है एलसीडी स्टैंड फॉर। एलसीडी का मतलब क्या है? द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एजीपी स्टैंड फॉर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज एडीएफ स्टैंड फॉर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। Next MCQs SWF stand for, and the correct option is option C, shock wave flash. Next MCQs PHP stand for. The correct option is option B, hypertext preprocessor. Next MCQs CRT stand for. The correct option is option B, cathode ray tube. Next MCQs PDF stand for. The correct option is option C, portable document format. Next MCQs MAC stand for. The correct option is option B, media access control. Next MCQs IP stand for. The correct option is option D, internet protocol. Next MCQs ASK stand for. The correct option is American Standard Code for Information Interchange. Next MCQs ISDN stand for. The correct option is option A, Integrated Service Digital Network. Next MCQs NOS stand for. The correct option is option C, Network Operating System. Next MCQs TCP stand for. The correct option is option C, Transmission Control Protocol. Next MCQs HTML stand for. The correct option is option C, Hypertext Markup Language. Next MCQs ANSI stand for. The correct option is option B, American National Standard Institute. And the next MCQs computer stand for. The correct option is option B, commonly operated machine, particularly used for technical education and research. And the next MCQs modem stand for. The correct option is B, modulator and demodulator. And the next MCQs, a combination of 4-bit is called. The correct option is option B, nibble. Next MCQs, in Excel, which key is used to select entire row? The correct option is B, shift plus space. And the next MCQs, 1 byte is equal to. The correct option is A, 8 bits. Dear students, the most important MCQs कंप्यूटर साइंस के आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट MCQs रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।